اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. General equilibrium approach and effects of tariff. In this respect, we will see the effects of tariff on a country's total consumptions, aggregate productions, and total welfare. In this connections, was shall discuss two cases: small country and large country. Effects of tariff when the country is small. When a small country imposes the tariff, it's not possible for the country to influence the international prices. However, because of tariff, the price of good will rise both for the domestic consumers and domestic producers. This will have the effect of reducing the import and consumptions. The production of import substitute will increase. The production of import substitute will go on increasing till the domestic producers are prepared to sell the product at the price with tariff. Because of tariff, the price of imported good rises for the consumers and producers, but it remains same for the whole nations, because the nations as whole gets the amount which has been earned in the form of tariff. It is explained. Suppose that X is an import commodity and its price is $1. The 100% tariff is imposed on this product. As a result, its price will go to $2. The nation as a whole gets the revenue in the form of a $1. It is shown in diagram OX and OY. Okay. PF static is equal to 2. PF is equal to 2. PW is equal to 1. PW static is equal to 1. CO IC1 K point, IC2 equilibrium point, F G H PF P point. Explain. According to these diagrams, we suppose that good Y is capital intensive goods, good Y is capital intensive, and the country is abundant in capital. If international price ratio is Px bata Py is equal to Pw is equal to 1, the country produced at point B, where it's specialized in goods Y, and the consumes at point E. When Pw is equal to 1 is tangent to IC2. If this country imposes 100% tariff on goods X, the price of good X rises both for the consumers and domestics. As a result, price ratio in the country Px bata Py is equal to P2.
2. General equilibrium effects of tariff in case of large country. When any large country imposes tariff, the volume of trade shrink, but on the other side, the TOT term of trade of the country improves. The fall in volume of trade leads to decrease the welfare of the country. It obviously that one effect of tariff is leading to increase the welfare, the TOT effect, while the other effect of tariff is resulting in decreasing in welfare, the fall in the volume of trade. Consequently, the welfare of small country what decreases. It is shown in diagram OX and OY. Now X2, X1, PUD 1.6, PW or PW static is equal to 0.8. Okay, then IC1, IC2 equilibrium point. OC2 star. Okay, Y1, Y2 H. Explain diagram. Explanations. According to figures to demonstrate the general equilibrium effects of tariff when the country is large, here we use the offer curves. The economy is basically in equilibrium at point E, where offer curves OC1 and OC2 intersect each other. In this way, free trade price ratio is settled at PW1. We suppose that country 2 impose 100% tariff on goods X. As a result, new offer curve is OC2 static. General equilibrium approach and effect of tariff taken in Urdu. अमूमी तवाज़नी तजज़िये की मदद से दरामदी तामीन के फ़लाई असरात पर बहस करते हैं, जबकि मुल्क एक छोटा और एक बड़ा मुल्क होगा। अमूमी तवाज़नी सूरत हाल इस सूरत हाल को कहते हैं जब एक माशियात में खुशहाली ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा रही हो। हर मुल्क चंद अशिया दरामद करता है, इस तरह वो माशी खुशहाली में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। जब एक मुल्क पैदावार और सरफ़ दौलत की ख़ास सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल कर रहा हो तो वो इस हालत में अमूमी तवाज़न कहा जाता है। अमूमी तवाज़न की कैफियत हो तो एक माशियात में पैदावार की मकदार और सरफ़ दौलत में किसी तब्दीली का रुझान नहीं होता। अमूमी तवाज़न के नज़रिए की वजाहत के लिए तलब व रसद के तसव्वुरात को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। खतूत अमकानी पैदावार ख़त रसद की कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ख़त अमकानी पैदावार से हम दो अशिया की मुख्तलिफ़ मकदार को पैदा करने का जायज़ा लेते हैं। इसके बरक्स तलब के इजहार के लिए खतूत गैर जानबदारी को बुनियाद बनाना पड़ता है। खतूत गैर जानबदारी एक मुल्क के अफराद की दो अशिया के बारे में तरजीहात को ज़ाहिर करते हैं। तजारत की अदम मौजूदगी में एक माशियत उस वक़्त तवाज़न कैफियत में होती है जब ख़त अमकानी पैदावार और बुलंद ख़त गैर जानबदारी को छू कर गिर रहा हो। इस नुक्ता पर तलब व रसद आपस में बाहम बराबर होती है। तजारत के बाद भी
دو ممالک زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ بلند سے بلند خط غیر جانبداری تک رسائی حاصل کر سکے۔ بین الاقوامی تجارت میں عمومی توازن کی کیفیت جاننے کے لیے دو ممالک اور دو اشیاء کے مفروضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں عمومی توازن کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، تکثیر مصارف کے زیر اثر جب دو ممالک کے خطوط امکانی پیداوار الگ الگ ہوں مگر خطوط غیر جانبداری یکساں ہو۔ نمبر 2، تکثیر مصارف کے تحت جب دو ممالک کا خط امکانی پیداوار ایک ہو مگر خطوط جانبداری الگ الگ ہوں۔ نمبر 3، تقلیل مصارف کے تحت جب دونوں ممالک کے خطوط امکانی پیداوار اور خطوط غیر جانبداری ایک ہی ہوں، تو یہ کہلاتا ہے عمومی توازنی تجزیہ۔